On the occasion of Jan Aushadhi Divas, Prime Minister Narendra Modi interacts with beneficiaries of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, says the scheme is a commitment to provide every citizen cheap and best treatment, expresses satisfaction over formation of more than 6,000 Jan Aushadhi Kendras. PM Modi urges people not to believe in hearsay and rumors related to coronavirus, says whole world is adopting Namaste to counter spread of coronavirus, says we should do Namaste instead of handshake to greet each other. Efforts continue on war footing in India to contain coronavirus outbreak. Government establishes 51 testing labs. An additional 56 collection labs across the country, 31 positive cases confirmed in the country. State Bank of India allays fears of depositors of Yes Bank, saying their money is not at risk. Chairman and Managing Director Rajneesh Kumar says there is an in-principle approval to pick up 49% stake in Yes Bank, says total quantum of investment in Yes Bank is at 2,450 crore rupees. Enforcement Directorate conducts raids at residence of Yes Bank founder Rana Kapoor in Mumbai. Case registered against Kapoor under Prevention of Money Laundering Act. Lookout notice issued against him. In sports news, former Brazilian footballer Ronaldinho Gaucho arrested in Paraguay for attempting to enter the country with an adulterated passport. Ronaldinho and his brother Roberto Assis taken into custody by Paraguayan authorities after the duo were found in possession of adulterated passports. Hello and welcome to this edition of the news. I'm Rukma in our top story. On the occasion of Jan Aushadhi Divas today, Prime Minister Narendra Modi interacted with Jan Aushadhi Kendra beneficiaries via video conferencing. The Prime Minister emphasized that Jan Aushadhi Day is not just a day to celebrate a scheme, but a day to connect with millions of Indians and with their families who have got great relief from the scheme. He added that the government is working on 4 formulas for the health of every Indian. हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या-क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। Prime Minister hailed the benefits which Jan Aushadhi Kendras have provided to millions of families. He added that Jan Aushadhi centers have saved money of the poor and the middle class. अब तक 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है, करीब करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपए इसकी बचत
ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। The Prime Minister spoke in detail about the precautions that must be taken to overcome the outbreak of COVID-19. सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। The Prime Minister interacted with beneficiary Deepa Shah from Jan Aushadhi Kendra, Dehradun. Deepa, who was hit by paralysis, thanked the Prime Minister for all the benefits, for enabling the transformation of her life through Jan Aushadhi scheme. था दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हैंडली विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। The Prime Minister interacted with Aparna Kapriya from Varanasi, who runs a Jan Aushadhi Kendra. On the eve, she shared a special initiative. On the eve of International Women's Day, she shared a special initiative that benefits women. The Prime Minister congratulated her for all her efforts. सर, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं यहाँ वाराणसी में जन औषधि स्टोर्स चलाती हूँ।
जन औषधि स्टोर में 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। कितने समय से चला रही हो अपूर्णा जी? 18 महीने हो गए सर 18 महीने चलाते हुए। जी जी। तो 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। जैसे अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि जन औषधि केंद्र आपको मिला तो जी। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी थी क्या? जी बिल्कुल नहीं। किसी को रिश्वत देनी मैंने पड़ी थी अप्लाई क्या? किया था लाइसेंस के लिए। किसी को रिश्वत देनी और- पड़ी क्या? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सच बताइए। सच सर। अच्छा। सर ऐसा नहीं है। हाँ। हमको पता चला था ये लखनऊ से कि एक्चुअल में सर मैं 8-10 साल से मेडिसिन लाइन में हूँ और हम कैंसर मेडिसिन में काम कर रहे थे। कैंसर की मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है सर। एक मेडिसिन होती थी तो 1800 रुपए की, जहाँ पे 800 की मिलती है। जन औषधि पे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे 800 रुपए में मिलती है। तो उसके बाद हम लोग को लगा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम इस तरह से जन औषधि स्टोर्स खोलते हैं और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले इस चीज का। जो सीनियर सिटीजन है और ये महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा लाभ उनको मिल रहा है। महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन नहीं भी यूज करती थी, मैं गांव में जाती हूँ, स्कूल भी अडॉप्ट करती हूँ और उनको अवेयर करती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन कैसे वो यूज कर सकती हैं। इतने कम दामों में तो कोई भी ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई 1 रुपए में ले जाता है और जाकर के 2 रुपए में बेचता है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। पहले जितने लोग ले जाते थे, जितनी जी। बहनें ये सैनिटरी नैपकिन ले जाती थी, अब संख्या बढ़ी है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत सर। मैं पर मंथ 4 लाख नैपकिन तो बेचती हूँ अपने स्टोर से मैं सर। और बिल्कुल गरीब बिल्कुल, माँ बहनों को भी पता है कि ऐसा लेना चाहिए। पता है इसका सर, उपयोग- पता है। वही सर मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जन औषधि मित्र, एक मेरी मुहिम चलती हैगी जिसके तहत मैं महिला मित्रों को जोड़ती हूँ और वो अधिक से अधिक और महिला मित्रों को अपने साथ जोड़ती हैं ताकि माउथ पब्लिसिटी से और लोगों को पता चल सके। इसके लिए मैं एक लॉटरी सिस्टम में निकालती हूँ सर, ताकि जो आगे लोग बता रहे हो कि महिला मित्र क्यों बनाए हम, तो उनको जब वो लोग महिला मित्र अपने साथ लाती हैं या कोई भी वर्ग के लोग लाते हैं या पुरुष भी हो सकते हैं उसमें, तो फिर हम उनके लिए लॉटरी निकालते हैं और उनको दवा फ्री देते हैं। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारी सर आप देख भी सकते होंगे मेरे पीछे बहुत सारी मेरी महिलाएं मित्र इकट्ठी हैं आज यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने स्टोर के माध्यम से मैंने लगभग 25 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। उससे पहले हमारी बहनें और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सफलता मेरे कारण कम है, ये सफलता इसलिए है कि आप जैसी लाखों सक्रिय जागरूक बहनें अब इस काम को आगे बढ़ा रही है। Moving on, Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar participated in a special program organized on the occasion of Jan Aushadhi Divas in Pune. Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said that 2 Kerala TV channels have been banned for 48 hours, have been restored. He said that press freedom is absolutely essential for a democratic setup, and that is the commitment of the Modi government, as the government had fought emergency in which press freedom was muzzled. He said that the Prime Minister has expressed concern over the issue and that the government will take essential steps and find out if there is any wrongdoing. दोनों चैनल का प्रसारण तुरंत शुरू कर दिया गया है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी पूछताछ की चिंता जताई और हम ये कैसे हुआ इसकी जांच करेंगे, संबंधित अधिकारियों की पूछताछ करेंगे और मैं भी अपेक्षा हमेशा करता हूं कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम यही मीडिया और लोकतंत्र की विशेषता होती है।
The Enforcement Directorate on Friday raided the Mumbai residence of Yes Bank founder Rana Kapoor in connection with a money laundering probe against him and others. The raid is still on at his Samudra Mahal residence in Worli. Kapoor was also questioned at his home by the ED team. The case against him is linked to the DHFL probe as the loans lent by the bank to the company allegedly turned into NPAs. The raid was conducted under the Prevention of Money Laundering Act and is aimed at collecting evidence. The central agency is also probing Kapoor's role in connection with the disbursal of a loan to a corporate entity and the subsequent alleged kickbacks reportedly received in his wife's accounts. The Central Financial Probe Agency also issued a lookout circular against Kapoor so that he does not leave the country. A copy of the LOC has been sent to the airports with details of his passport. The State Bank of India has allayed fears of depositors of Yes Bank, saying their money is not at risk. Addressing the media in Mumbai, SBI Chairman and Managing Director Rajneesh Kumar said that there is an in-principle approval to pick up 49% stake in Yes Bank and the total quantum of investment in Yes Bank at 2,450 crore rupees. SBI board has given in principle approval to explore the possibility of picking up a stake up to 49% in Yes Bank. As per the draft scheme, SBI can take up to 49%. The only requirement is that there is a lock-in of 26% for 3 years. So it sets in a way the boundary. So minimum 26% for 3 years, that is a sort of an obligation that is part of the scheme. An SBI chairman further said that a minimum commitment of SBI is to pick up 20% stake. Assuming again that SBI picks up entire 49%, we may pick up, we may not pick up. 26% of 20,000 crore, that is a commitment. If tomorrow the capital is 20,000 crore, we will pick 26% of that. That is under the scheme. That is the requirement. This is the total commitment in terms of if it is 26%, if it is 49%, double that. So maybe 10,000 crore order. And the government has also reassured depositors of capital-starved Yes Bank. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that she is in regular touch with the RBI over the issue and work is on to resolve matters swiftly. The FM also said that the central bank has taken this step in the interest of the financial institution, its depositors and the country's economy. Further, she said restructuring plan given by RBI will be implemented in the next 30 days to safeguard the interests of depositors. Prime Minister Narendra Modi will hold a meeting today in New Delhi to review the coronavirus outbreak. 31 confirmed cases of the virus have been reported in India so far. Size and magnitude in the S Bank. And as we were telling you, Prime Minister Narendra Modi will be holding a meeting today to take stock of the situation arising out of the outbreak of coronavirus in the country. 31 confirmed cases so far. And efforts are underway on a war footing to contain the spread of the virus. Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan has asked all states to monitor the airport management to ensure effective screening of passengers. The minister on Friday reviewed the action and preparedness for the management of novel coronavirus at a meeting through video conferencing with chief secretaries and health ministers of all states and representatives from related organizations. The number of those infected with the virus has now reached 31 in the country. Nearly 30,000 people, 29,607 to be exact, are under observation. Passengers coming from abroad are being screened. Screening has begun at 9 new airports, taking the overall number to 30. The government has established 51 testing labs and additional 56 collection labs across the country to tackle the outbreak.
And several measures have been taken to deal with the outbreak. It is mandatory for passengers arriving from other countries to undergo screening and checks. The Health Ministry has advised people to stay away from events that involve mass gatherings. State governments can take necessary steps on mass gatherings. UGC has also advised universities to ensure there are no gatherings in large numbers. Ministry of Personnel has exempted government employees from marking biometric attendance. The exemption will remain in force till the 31st of March. People will not be allowed to attend the popular daily retreat ceremony between India and Pakistan at the Attari Wagah border in Punjab in view of coronavirus outbreak. The International Indian Film Academy Awards IFFA 2020 have been postponed due to the outbreak's fears. The event was scheduled at the end of March in Madhya Pradesh. The upcoming Combined Shooting World Cup in New Delhi has been also postponed. And India is working with the government of Iran to facilitate the evacuation of Indians stranded there and sending back Iranian nationals currently in India. To ensure that the Indians brought back from Iran are free of coronavirus, the government is making arrangements to assay their test samples to clear them in batches for a flight back home. The swab samples of the first batch of Indians are being tested in Qom for the coronavirus disease before they are cleared for their return to India. The flight is expected to land this morning in Delhi with the samples and take waiting Iranians back home. Meanwhile, China has reported 28 new deaths from the outbreak, bringing the nationwide toll to 3,070. There were 99 fresh cases of infection, according to the country's National Health Commission, with the rise in new cases outside the virus epicenter of Hubei province for a third consecutive day. The number of COVID-19 cases worldwide has surged past 100,000 as a wave of countries reported their first cases. Italy on Friday reported 49 more deaths from the new coronavirus, the highest single-day toll to date, bringing the total number of fatalities of the past 2 weeks to 197. The total is the second highest in the world after China. In Singapore, again, 13 new cases of coronavirus have been reported, taking the total number of people infected by the deadly virus in the city-state to 130. In the United States, President Donald Trump on Friday signed an $8.3 billion measure to help tackle the outbreak that has killed more than a dozen people in the U.S. and infected more than 200. The legislation provides federal public health agencies with money for vaccines, tests and potential treatments, and helps state and local governments prepare and respond to the threat. Meanwhile, U.S. Vice President Mike Pence has confirmed 21 new cases of COVID-19 of people on board a cruise ship stranded off the coast of San Francisco. Of these 21, 19 are crew members. The other 2 are passengers. The Grand Princess has been stranded off the coast of San Francisco since Wednesday when it was supposed to dock. Raksha Mantri Rajnath Singh has said that the government has given the highest priority to national security through vital defense acquisitions to fill gaps, as well as concentrating on building a robust indigenous manufacturing base for the country's future defense needs. Raksha Mantri was addressing the 58th National Defense College convocation ceremony in New Delhi today. India today has emerged as an important contributor towards growth, development, prosperity, peace and stability in both Asia and in the world. Our armed forces are also swiftly transforming to meet future regional and global security challenges. In this regard, our government has given the highest priority to our national security through vital defense acquisitions to fill our gaps and
more importantly, concentrating on building a robust, indigenous manufacturing base for our future defense needs. Former Brazil and Barcelona forward Ronaldinho Gaucho was arrested in Paraguay on Friday, the 6th of March, for attempting to enter the country with an adulterated passport, Paraguayan police said. Paraguayan police say Ronaldinho and his brother were taken into custody just hours after a judge refused to ratify a prosecutor's proposal for an alternative punishment. The unexpected twist came just hours after the two brothers appeared set to leave the landlocked South American nation and draw a line under their tumultuous stay that began on the 4th of March, Wednesday, when they were questioned by police after presenting falsified passports on arrival at the Asunción airport. Federico Delfino, a prosecutor investigating the case, said he believed the two had been tricked into accepting Paraguay passports on arrival and recommended that because they had cooperated with officials, they be released after paying an alternative punishment. However, a judge rejected that accord on Friday, and just minutes later the deal was abrogated by the top public prosecutor. Arrest warrants were then issued for the former Grêmio, AC Milan and Paris Saint-Germain player and his brother Roberto Assis, who is also his business manager. And that's all we have for you in this edition of the news. News and updates continue on DD News and DD India. Namaskar.